you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman, Rajya Sabha. I will look into it. Please, आप बैठिए. Chairman, Please, आप बैठिए. Rajya Sabha, I look into it. of Please, the आप entire बैठिए. house belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I look into disheartened. it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman, Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman, Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठिए. Please, आप बैठिए. Please, आप बैठ. Sir, I will look into it. I will look into it. Sir. I will look into it. Please, आप बैठिए. Chairman, Please, आप बैठिए. Rajya Sabha, being I look into custodian it. of Please, the आप entire बैठिए. House, belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. An honourable leader of opposition has made his customary remarks to felicitate the honourable chairman. Honourable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why honourable leader of opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खरगे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए. ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके
आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है। और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग which is not necessary on this solemn occasion.